Travel for me has always been more about the journey than the destination, and this episode portrays just that. Sometimes in life, all we need is a break from work, a break from phones, a break from everything that's going on in our lives. Sometimes stepping into these remote, unheard places is exactly the therapy that we need for ourselves to rejuvenate ourselves. So, my dear friends, let me take you on a journey with me across these vast lands where time stands still and every breath echoes, and nothing and everything exists in perfect harmony. So hey guys, finally हम पहुंच चुके हैं सिसु विलेज में. सिसु is a small town ahead of Manali and अभी जब कि अटल टनल खुल चुका है, so it has become very easily accessible. हम यहाँ पर पहुंच चुके थे कल शाम को and today we are gonna head out and explore this beautiful tiny सा छोटा सा village. So we are starting up with the Sissu waterfall, which is just a short hike from here and it is beautiful. You will get to see the views of it in the next few shots, so watch it. They say the best view comes after the hardest climb, and I think now I exactly know why. We went head first into the waves. We were right there. It's one of those mornings that make you think, the kind where your mind just unravels. Mornings like this that make you smile from ear to ear. You were a great one at the wrong time. I could never get. So guys, मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि तुम ये exotic locations ढूंढती कैसे हो, कहाँ से पहुँच जाती हो उन पर. So मेरा ये आप सबको सजेशन है कि जब भी आपको कोई ऐसी जगह दिखे and you feel like doing it, ज़्यादा सोचो मत, just go for it and do it. Like कोई भी पहाड़ दिखे और आपको लगता है आपको उसके टॉप पे जाना चाहिए, तो बस चले जाओ, find a safe route and go for it. Whenever there is a river flowing by, go on past, jump in that river, go and see for yourself. Of course taking safety precautions, but ज़्यादा भी safe मत खेलो, थोड़ा सा adventure भी कर लिया करो. And that's how you will also find yourself in these wonderful creations created by God, and you will forever be grateful for yourself for taking that decision. And trust me, that will be the best decision you would have ever taken for yourself. When all is said and done. When all is said and done. When all is said and done. When all is said and done.
सिस्सू वाटरफॉल का छोटा सा हाइक करके अब हम निकल पड़े हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ, विच इज़ कीलोंग विलेज। एंड वहाँ तक पहुँचने के पहले जो रास्तों में नज़ारे थे, मैं क्या ही बताऊँ, दे वर जस्ट टू डाई फॉर। आई मीन आप देखते रह जाओगे ऐसे रास्ते। आज सुबह सुबह कीलोंग से निकल पड़े थे त्रिलोकीनाथ टेम्पल की तरफ। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स एंड आउट देयर वहाँ पर वो टेम्पल का गुम्बद हमें दिख रहा है एंड अब बस हम वहाँ पर जाने ही वाले हैं। सो द स्पेशलिटी ऑफ दिस टेम्पल इज़, इसे ना कि शिव भक्त एंड हिंदूज़ मानते हैं बल्कि बुद्धिस्ट भी मानते हैं। एंड कहा जाता है कि इट इज़ फ्रॉम द टाइम ऑफ पांडवास। एंड ऑल्सो शिव के वैसे तो 4 धाम है, बट इस मंदिर को हम 5वां धाम भी कहते हैं, मानते हैं। सो लेट्स गेट इनसाइड एंड देखते हैं कैसा है। मुझे पता नहीं है वहाँ पर शूटिंग अलाउड है कि नहीं, बट वी विल फाइंड इट आउट फॉर आवरसेल्व्स। बट टिल देन दिस लुक्स लाइक अ लवली टेम्पल टू मी। I have a deep-seated love affair with these remote places. I can never really get enough of them. And for me, Himachal tops that list. गाइस ये टेम्पल सिचुएटेड है बिल्कुल माउंटेन्स के बीचों बीच। एक प्यारा सा त्रिलोकीनाथ गांव बसा हुआ है एंड यहाँ तक आने के लिए वी क्रॉस्ड अक्रॉस सो मैनी डिफरेंट वैलीज़ एंड हर वैली का हर मोड़ की तरफ एक अलग ही नज़ारे थे एंड द टोपोग्राफी वॉज चेंजिंग विथ एवरी किलोमीटर एंड इट वॉज जस्ट वर्थ इट। लाइक मतलब मेरी आंखें चकाचौंध रह गई थी देखते देखते। इज़ दैट ब्यूटिफुल। They deem me mad because I will not sell my days for gold. And I deem them mad because they think my days have a price. I firmly believe कि करियर से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका ज़िंदगी जीने का तरीका। ज़िंदगी छोटी नहीं होती है, पर शायद हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। तो वक्त रहते हमें अपने पैशन और अपने सपनों को जी लेना चाहिए।